Hello students, this is Vineeta Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 9 chapter number 2, The Sound of Music by Deborah Cowley. This lesson is divided into two parts. Part first based on Evelyn Glennie and second part is based on Bismillah Khan. They both are very the biggest milestone in the world of music. So without any delay, let's start it. Part first, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. The title itself is very interesting. Here the author says, Evelyn Glennie listened to the sound without hearing it. Now we all wonder and we are confused also कि जब किसी को सुनाई नहीं देता है तो वो कैसे कैसे साउंड को सुन सकती है अगर उसे सुनाई नहीं दे रहा है तो हाउ कैन यू लिसन टू साउंड व्हेन यू कांट हियर अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो आप कैसे किसी साउंड को सुन सकते हो सो दिस इज द समथिंग वी विल डिस्कवर इन दिस चैप्टर दैट हाउ एवेलिन ग्लैनी वाज एबल टू लिसन टू साउंड ऑल्दो शी कुड नॉट हियर ओके God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So here in these lines, someone has commented this about the Evelyn Glennie, that he says, although God take away her hearing power, भगवान ने उससे उसकी हियरिंग पावर मतलब सुनने की शक्ति तो छीन ली बट शी वॉज इम्पेयर्ड ऑल्सो बट ही गेव हर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग भी दिया है एंड दैट वाज इज द सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ म्यूजिक द सेंस ऑफ फीलिंग द वेरी डीपली she can feel the music than compared to the normal person, and that is why she was able to express the music so beautifully and so well. She is a well-known multi-percussionist. Multi-percussionist means the someone who can play the different percussion instruments like xylophones, drums, like that. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. From here, we come to know the theme of the story and the message we get from the story. The story of the Evelyn Glennie is a motivational story, and it inspires all of us to overcome our physical disabilities and achieve our dreams and goals just like Evelyn did. So let's start our story. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. So here rush hour crowd jostle. Jostle means होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होना, भीड़ में एक दूसरे को push करना and like that. And slight means very small and thin. बहुत ही मतलब short heighted and very thin मतलब बहुत ही पतली दुबली सी एक लड़की. Okay, so let's discuss these lines. ये पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे ये सीन जो है वो एक ट्रेन प्लेटफॉर्म का बताया गया है जो कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ है. पीपल आर पुशिंग ईच अदर टू गेट वे. अपना रास्ते ढूंढने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं. एंड उधर ही देयर इज अ स्मॉल थिन गर्ल, इट इज एवेलिन. और एक एवेलिन एक नाम की एक लड़की वहां पे है. And Evelyn is standing at the railway platform waiting for the train. And just as she feels the vibration of the approaching train, she realizes that the train is about to come. So she gets nervous and as well as excited. Okay, जैसे ही उसको ट्रेन के पहुंचने की अप्रोच होने की जब वाइब्रेशन सुनाई देती है तो उसी टाइम पे वो नर्वस हो जाती है और एक्साइटेड भी. ऐसा क्यों? Because Evelyn Glennie is a Scottish girl. Okay, वो स्कॉटलैंड में रहने वाली एक लड़की है. ठीक है.
she is going to London to learn the music, as she has got admission in the Royal Academy of the Music. So right now Evelyn is in Scotland. Okay, Scotland जो है वो एक यूरोप की एक कंट्री है, और स्कॉटलैंड की लाइफ जो है वो इतनी फास्ट नहीं है जितनी कि लंदन की है. ठीक है, so that is why Evelyn is nervous, because she is leaving the Scotland for the London, and she is excited also because she is going to something, doing something that she always dreamed of. जो हमेशा उसका सपना था वो उसको पूरा करने जा रही थी. She is going to the Royal Academy of Music to learn music. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from the Scottish. Daunting का मतलब होता है डर जाना या फिर जिस चीज को लेके थोड़ा सा नर्वस होना. daunting का मतलब ये होता है टीनेजर, आपको पता ही है टीन्स जो होते हैं. ठीक है. So here Evelyn is 17 year of age and she is a teenager, and she is fresh from a Scottish farm, because I already explained in the last lines that Scotland की जो life है वो इतनी ज़्यादा fast नहीं है जितना कि लंदन का है. तो वो वहाँ से जा रही थी, तो she is 17-year-old and teenager, and as well as she is fresh from the Scottish farms. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring musicians means होता है कोई भी person जो कि क्या हो, musician बनने जा रहा हो, and profoundly deaf का मतलब होता है जो कि बिल्कुल बहरे हो चुके होंगे, मतलब जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है. तो इसमें क्या बोला गया इन लाइन्स में, Evelyn could not hear, and this was a bigger challenge for her, because moving from a rural area to a fast life was a smaller challenge, but the Evelyn faced a much bigger challenge, that was her inability of hear. Music सुनने के लिए, music करने के लिए, आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए आपको क्या होता है, आपको सुनना बहुत जरूरी होता है. बट हियर तो प्रॉब्लम क्या है, एक रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाने वाले प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी नहीं है जितनी एवलिन के लिए उसकी इनएबिलिटी है. ठीक है. Evelyn Glennie loss of hearing had been gradual. Had been gradual मतलब होता है कि धीरे धीरे. ठीक है. तो slowly she started losing the power of hearing, and one day she was absolutely deaf. धीरे धीरे उसकी जो hearing power है वो चल जाने लगी, और एक दिन वो completely बहरे हो गए. ठीक है. Her mother remembered noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she did not move. I suddenly realized she had not heard, say Isabel Glennie. Isabel Glennie जो है वो यहाँ पे ग्लैनी की जो एवलिन जो है उसकी क्या है, मदर है. एंड एवलिन मदर बोल रही है कि उनको एक इंसिडेंट याद आता है जब एवलिन 8-year-old की थी, एंड शी सेड दैट एवलिन was waiting for her turn to play the piano, but when her name was called out she did not respond. बार बार जब वो उसकी मदर उनका नाम बोल रही थी तो वो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी. एंड दैट टाइम उनकी मदर ने उनको रियलाइज किया दैट एवलिन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर नेम, दैट मीन्स शी डिड नॉट हियर हर नेम बीइंग कॉल्ड आउट. जब बोला गया तो उन्होंने उसका नाम जो है उन्होंने सुना ही नहीं. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal का मतलब होता है छुपाना. ठीक है. So as Evelyn lost her sense of hearing in the phrases means gradual process. Okay, in the beginning when she could hear partially, she managed to hide this disability from the friends and teachers. अपने friends और teachers से धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने hearing power को छुपाने की कोशिश की. But by the time she was 11, her marks has deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. Specialist means होता है एक डॉक्टर जो स्पेशलाइज हो पर्टिकुलर पार्ट को ठीक करने में बॉडी के. डिटेरियोरेटेड मीन्स होता है कम होना. ठीक है. अर्ग मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना. सो व्हेन एवलिन वाज 11-year-old, हर मार्क हैज स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग. डिटेरियोरेटिंग मीन्स धीरे धीरे मतलब उसको सुनना बहुत कम हो गया था. द हेडमिस्ट्रेस रिक्वेस्ट किया उन्होंने अपने उनके पेरेंट्स से कि एवलिन को किसी अच्छे डॉक्टर को या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Impaired का मतलब होता है कम होना. ठीक है. weak हो जाना. When the doctor checked upon the Evelyn, he found that Evelyn had lost the sense of hearing. Okay.
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उस टाइम पे डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया, एवेलिन के पेरेंट्स को, कि उनको हेयरिंग एड्स ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो कान में फिट कर दिए जाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, कुछ हद तक जो डेफ पर्सन्स होते हैं वो सुन सकते हैं. एंड उन्होंने फिर सजेस्ट भी किया एवेलिन के लिए कि उसको डेफ चिल्ड्रंस की जो स्कूल है वहाँ पे उसे एडमिशन दिलवा देना चाहिए. उसने डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को बोला. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवेलिन. एवेलिन को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हो रहा था. सब कुछ उसके सामने अंधेरा जैसे आने लगा था. उसकी कलरफुल लाइफ जो थी वो बिल्कुल डार्कन हो चुकी थी और यही सारी फीलिंग्स थी उसकी उस टाइम पे. बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. This line shows that Evelyn had determinations. Although Evelyn got such a shocking news, still she was determined and she did not want to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. Pursue means होता है to follow. As Evelyn was passionate about the music, this news also did not break her. उसका जो passion था music के लिए, ये news सुन के भी कि वो अब सुन नहीं सकती है, वो भी उसे उस passionate को तोड़ नहीं पाई. She was determined to live life like normal people and follow her interest in the music. One day, she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone एक musical instrument होता है जिसमें wooden bars होते हैं different length के, और उस पे जब sticks को जब उस पे beat किया जाता है तो different notes के sounds आते हैं. So when the Evelyn saw a girl playing a xylophone, she said that she also want to play too. Most of the teacher discouraged her, but her percussionist Ron Forbes spotted her potential. Percussionist का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि ड्रम, तबला, ऐसे डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं, और पोटेंशियल का मतलब होता है क्वालिटी या फिर एबिलिटी. ओके, नाउ ऑन वन हैंड एवेलिन के सारे टीचर्स जो थे उसको डिस्करेज कर रहे थे कि कैसे वो म्यूजिक बजा सकती है जब उसको सुनाई नहीं दिया रहा है, क्योंकि म्यूजिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो सुनना होता है. बट रॉन फॉर्बिस जो मल्टी परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने एवेलिन के पैशनेट को पहचाना और उन्होंने डिसाइड किया that he began by tuning two large drums to different notes. Ron Forbes thought that he would teach Evelyn to feel the music. He took two large drums and he tuned them to different notes. And drums are the musical instrument, and he tuned each drum to the different note. So the sound produced by the drum was different, and so it was distinct also. So both the drum made the different sound. Then he told Evelyn, don't listen through your ears. He would say, try to sense it in some other way. उन्होंने बोला कि तुम्हें अपने कानों से कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट सेंस इट, यू जस्ट डेवलप द सेंसेशन पावर इन योर बॉडी, यू जस्ट फील द म्यूजिक. Say Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west down. The middle of your body is known as west. So Ron tuned both the drums to the different notes. The upper part of the Evelyn body above the waist could feel the higher notes of the drum, and the lower part of her body, the part down from the waist, could feel the lower notes of drum. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. इसी तरीके से एवेलिन ने क्या किया, साउंड को लिसन करना शुरू कर दिया. She cannot hear, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने सुनना शुरू किया. किससे? सेंस से. उसने सारे अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से डिफरेंट नोट्स को सेंस करना स्टार्ट कर दिया. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. मैंने सिर्फ अपना माइंड को ओपन किया और अपनी बॉडी से डिफरेंट साउंड्स और वाइब्रेशन को सुनना शुरू किया, और बाकी सारी तो मेरी जो डिटर्मिनेशन थी और मेरा जो हार्ड वर्क था, सिर्फ वही आया है सामने. She never looked back from that point. और उस टाइम से उसने पीछे नहीं देखा. Once Evelyn overcome the hurdle, she started sensing the different sound through the different part of her body, and she progressed in her career. She taught the United Kingdoms with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. Youth का मतलब होता है young people, orchestra होता है group of musicians. So the Evelyn taught the United Kingdom and performed with the youth orchestra, and by the time Evelyn reached the age of the 16, and she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy
of music and scored one of the highest marks in the history of the academy. ऑडिशन का मतलब होता है एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देना डायरेक्टर के सामने जिसमें वो देखेगा कि आपका जो कंटेंट है वो स्ट्रॉन्ग इनफ या गुड इनफ है या नहीं है. सो एवेलिन गिवन एन ऑडिशन फॉर द एडमिशन ऑफ द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड वहाँ पे उसने क्या किया, अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे वो वहाँ पे पास हुई एंड नो अदर पर्सन हैड स्कोर्ड सच अ हाई स्कोर एज एवेलिन डिड. She gradually moved from orchestral work to the solo performance. Orchestral matlab group of musicians, solo means a single performance. So initially Evelyn performed in a group and she got well in her music, so she got confident and she started performing alone. At the end of the 3-year course she had captured most of the top award. 3 साल के कोर्स में उसने जितने टॉप अवार्ड्स होते हैं वो सब उसने हासिल कर लिए थे. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If anyone says that Evelyn has done something great, she does not acknowledge that. She is very humble and down to the earth. If you work hard and know where you are going, you will be get there. Evelyn ने बोला कि अगर तुम्हें कुछ चीज सक्सेस चाहिए तो you have to follow 2 important verbs. You have to do work hard and you have to set your aim. Okay, if you work hard and you have an aim, then a target which you have to achieve, then you will be definitely achieve it. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule. Most sought of का मतलब होता है बहुत ज़्यादा popular होना, demand में होना. So Evelyn also achieved her goal. Evelyn को भी उसका goal मिल गया था, उसने achieve कर लिया, तो उसने बहुत work hard किया, उसने अपने aim को हासिल किया, उसने बहुत ज़्यादा most famous and the most soughter after musician of the world, and she did that, and she gained mastery of almost 1,000 musical instrument, and she is the most popular multi-percussionist of the world. She has a very busy schedule and she has a programs and concerts all over the world. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. उसको देख के कभी ऐसा लगता ही नहीं. Intriguing का मतलब होता है क्यूरियस, बहुत ज़्यादा क्यूरियसनेस रहती है कि एवेलिन किस तरीके से उसमें फंक्शंस में परफॉर्म करती है. इतना effortlessly बिना सुने हुए कोई इंसान कैसे परफॉर्म कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है उसके परफॉर्मेंस में. In our 2-hour discussion, she never missed a word. So the writer Deborah Colley took Evelyn's interview from last 2 hours, and Deborah says that Evelyn never missed a single word that she spoke. And men with a bushy beard give me trouble, she laughed. वो हंसने लगी और उसने बोला कि कोई भी इंसान जिसके बहुत ज़्यादा बुशी बियर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लंबी लंबी दाढ़ी मूंछें जिनको होती हैं, तो बोलते हैं वो इंसान मुझे हमेशा ट्रबल में डाल देते हैं क्योंकि मुझे उनके लिप्स मैं उनके रीड नहीं कर पाती, उनके लिप मूवमेंट्स मुझे दिखाई नहीं देते हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स अ होल फेस, स्पेशली द आईज. एवेलिन ने बोला कि सिर्फ मैं लिप मोमेंट से नहीं देखती हूँ, पर्सन्स के फेस को भी मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ. वो पूरे फेस को, उसके एंटायर एक्सप्रेशन को और उनके जो आईज है, उनके मोमेंट को, इन सबको वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं जिससे उसको पता लग सके कि सामने बैठा इंसान उससे क्या बातें कर रहा है. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट. लिल्ट का मतलब होता है असेंट. असेंट मीन्स मतलब टोन, मतलब जैसे कोई बंदा अगर हरियाणा से है तो वो अगर कुछ बोल रहा है तो उसका हरियाणा टोन आ रहा है कोई किसी भी लैंग्वेज में, तो इसी तरीके से वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी तो स्कॉटिश लिल्ट उसकी आती थी. सो माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. उन्होंने बोला कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी. बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. बट डेफ होने के बावजूद भी 11 ईयर के बाद में उन्होंने किस तरीके से फ्रेंच और जापानीज सीखा, ये सब मतलब ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करता है कि उनका डेफिनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ. ओके. For music, she explained it pausing through every part of my body, tingles in the skin, my cheekbones and even in my hairs. Tingles का मतलब होता है slight prinkle करता है या फिर sensation जो होता है. So Evelyn ने explain किया कि how she identify the music. She create the sensation in her skin, in her cheekbones, even in her hairs. So every part of the Evelyn body respond to the music. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. Okay. जब भी वो जाइलोफोन बजाती थी, जब भी वो स्टिक उस पर बीट करती थी तो स्टिक
की जो आवाज़ है, रेजोनेंस है, उसका जो वाइब्रेशन है उसके फिंगर टिप्स में वो फील करती थी कि वो क्या बजा रही है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. रेजोनेंस मतलब होता है इको, जो होता है साउंड का इको जो होता है उसको बोलते हैं. तो एवेलिन जब ड्रम बजाती थी, शी लेन टुवर्ड्स द ड्रम एंड शी कैन फील द इको फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. उसके बॉडी में जो इको साउंड फ्लो होता था वो सब फील करती थी. ऑन a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. So whenever Evelyn performed, she performed on a wooden platform and she responds her remove her shoes so that she can feel the vibration of the musical instrument pass through the floor into her feet and up to her legs. That is how she can feel the sound of the musical instrument. Not surprisingly, Evelyn delighted her audience in the 1991. She was presented with a Royal Philharmonic Society prestigious soloist of the year award. एवलिन को उसने मतलब उसके जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी उनसे. 1991 में उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोशिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला उनको. Says the master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he had given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. जेम्स ब्लेड जो है वो जो कि मास्टर परक्यूशनिस्ट है, उनके वर्ड्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे. उन्होंने कमेंट किया था इसके बारे में कि भगवान ने उससे उसकी हियरिंग पावर तो छीन ली, लेकिन उसको उससे भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसने दिया. वो सुन नहीं सकती लेकिन वो फील कर सकती है किसी भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा. दैट इज़ वाई, इसी वजह से वो क्या करती है, म्यूज़िक को इतना ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट कर पाती है. एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक. वर्कहॉलिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने आप को काम करने से रोक नहीं सकता, हार्डवर्क करने से रोक नहीं सकता. तो एवेलिन ने बोला कि वो कुछ हार्डवर्किंग बहुत ज़्यादा है, वो अपने आप को काम करने से रोक नहीं पाती है. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन अ क्लासिकल म्यूजिक. नाउ टू बी एट पार विद दोज पीपल हु कैन हियर हु आर म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिशियंस, एवेलिन वर्क वेरी हार्ड बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मियस. इनॉर्मियस मतलब होता है बिग, बहुत बड़े. एवेलिन ने बोला कि मुझे जो रिवार्ड्स मिले हैं वो मेरे हार्डवर्क से भी बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in the prison and hospitals. Evelyn जो है वो charity भी करती थी, वो free concerts देती थी hospitals and prisons में. And she also give high priority to the classes for young musicians जो कि ऐसे बच्चे जो कि म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो उनकी भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी, उनकी क्लासेस लेती थी. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is a nowhere that they cannot go. एवलिन जो है वो एक इंस्पिरेशन है सभी के लिए. और एन रिचलिन जो कि बिलोंग करती है बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रंस के लिए, उन्होंने बोला एवलिन इज एन इंस्पिरेशन फॉर दोज चिल्ड्रन हु कैन नॉट हियर. जो सुन नहीं सकते उनके लिए एवलिन जो है वो एक इंस्पिरेशन है. एंड व्हेन दे गेट टू नो एवलिन्स स्टोरी, दे फील्स दैट दे कैन अकम्प्लिश एवरीथिंग and they can fulfill all their dreams. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie जो है, accomplish का मतलब होता है अचीव करना. वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा अचीव कर चुकी थी जो कि उनसे दोगुनी एज में कोई भी इंसान अगर अचीव करता. She had brought percussion to the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving. Orchestra एक group of people होता है जहाँ पे different musical instruments होते हैं, percussion instruments होते हैं like drum and xylophone. ये ऑर्केस्ट्रा के पीछे रखे जाते हैं, दे आर प्लेस्ड एट द साइड. बट एज एवेलिन परफॉर्म सोलो, जब एवेलिन अकेले में परफॉर्म करती थी तो वो क्या करती थी, इन स्पेशल परफॉर्मेंस में परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स को उनको सामने रखती थी ऑर्केस्ट्रा के. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to the millions. Evelyn's story is a very inspiration to those people who are physically disabled. They feel that if Evelyn can achieve her dreams, even they can. And Evelyn has given a lots of pleasure to her audience by playing such a good music. So that's all in your chapter. If you like my video, please share and subscribe it. Thank you so much.